Okay, audible and visible now. यस सर। चलो स्टार्ट करते हैं ना। बेसिकली लास्ट क्लास में हम लोगों ने जहां पे एंड किया था, इफ यू रिमेम्बर, आई जस्ट शो यू। एंड का जो डिस्कशन अपना चल रहा था, दैट वाज अबाउट दिस। हम लोगों ने ऑर्डर वगैरह की तो बात कर ली थी। उसके बाद हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ पे आ गए थे, जिसमें हम लोगों ने बात किया था कि इफ यू आर हैविंग अ रिएक्शन लाइक ए गिविंग प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स वेयर ए इज द सिंगल रिएक्टेंट, दिस इज द ओनली रिएक्टेंट एंड इट्स कोफिशिएंट इज आल्सो 1। ठीक है, राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दैट एंड वी हैव गॉट कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम फॉर all the orders possible, and then we have talked about half life. Okay, so I'll just summarize that thing today, what we have seen so far, and थोड़ी सी डिटेल में भी उसके जाएंगे. We were talking about that integrated rate law and half life में rate of reaction can be differential form was minus dA by dt, and which can be written as k times constant a raised to n, where n is the order of reaction. Here n is considered to be order of reaction. And after that, by integration, we have established that अगर ये first order का रहा, that means n equals 1 हुआ, so then we were getting ln c naught by c is equal to kt, and half life, which was t half, was equal to ln 2 by k or 0.693 by k, and it was independent of c naught. This is very important point. Later on we'll see that कि ये बहुत ही major role play करेगा in solving many questions, including the radioactivity of your nuclear physics also. ठीक है, we'll see that part also. And then बाकी सब में जो हम लोगों ने इंपॉर्टेंट वाली बात की थी, दैट वाज एक तो था कि हमारा अगर जीरो ऑर्डर हुआ तो क्या. तो जीरो ऑर्डर में आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट if I am having a zero order reaction, so it was having half life equals C naught by 2K, which is directly proportional to C naught, and C was having a linear relation with T, that was C naught minus C is equal to KT. अभी देखो इसी को अगर मैं एक्सपैंड भी करूंगा ना, वी कैन एक्सपैंड इट ऑल्सो. सो बहुत सारे फॉर्म्स आ जाएंगे यहाँ. एल एन सी विल बी एल एन सी नॉट माइनस के टी, एक तो आ जाएगा. एंड और भी ज्यादा एक्सपैंड करोगे तो इट विल बी गिविंग यू सी नॉट इंटू ई रेज टू माइनस के टी. ओके, देखो क्या है ना, यहां से देख लो एक बार, मैं दिखा देता हूँ इसको. तो सी नॉट बाय सी बिकम्स ई रेज टू के टी, विच मीन्स सी upon C naught will become e raised to minus kt, and that's why we can have this relation. So this is the direct relation between C versus T, which is not linear definitely. It is exponentially decreasing function, जिसकी बात आगे हम लोग ग्राफ के टाइम पे करेंगे. लीनियर जहां ग्राफ मिल रहा है वहां पे देखो C is simply C naught minus kt. ये C versus T will be a linear relation, that means it will be giving the straight line, है ना. Recording is on now. Okay. Now, if I'm talking about a third order, second order reaction, particularly इन तीनों की बात मैंने कहा कि बहुत बार लूप कर रहे होंगे. So for second order reaction, the relation was this, and if you want to write C versus T, तो वो आगे जाकर एक तो रिलेशन जो अच्छा वाला रिलेशन है जो हम लोग आगे यूज करेंगे, that is this. But if you want to write C, तो that will become inverse of this whole thing. So these are the three orders जिसको हम लोग continuously carry करेंगे. And in this part, if you see half life particularly in first order was independent of C naught. In this case, zeroth order, it is directly proportional to C naught, and in second order, it is inversely proportional to C naught. देखो C naught is coming in the denominator. Is it okay? After knowing these relations, जनरल भी किया था कि अगर कोई भी हाफ ऑर्डर दे दे, 2/3 ऑर्डर दे दे, वट एवर ऑर्डर इज गिवन ना, उसके लिए हम लोगों ने एक रिलेशन ऑलरेडी निकाल के रखा है, विच इज रेयरली यूज. बस उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग देखोगे फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे होंगे. तो दिस वाज द रिलेशन जो मैंने तुमको बताया था, टी हाफ एंड सी वर्सेस टी का. दीज आर द टू रिलेशंस. बट इसमें से जो इंपॉर्टेंट लर्निंग थी वो क्या थी, तो इन जनरल मैंने बताया था, इफ यू सी द टी हाफ का एक्सप्रेशन, इट इज कमिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी नॉट रेज टू 1 माइनस एन. एंड लकीली मैंने बोला था कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में भी इट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ सी नॉट. दैट मींस एन का वैल्यू 1 रख के देखो सी नॉट गायब हो जाएगा. So even if I am having first order reaction or any reaction with any order, we can say that T half in general is proportional to C naught raised to 1 minus n.
will not carry this whole expression in first order kinetics, but in general, we can say that T half of a reaction will be directly proportional to C naught raised to 1 minus n, including first order. I'm not talking about the whole expression, but simply that part that it is proportional to C naught raised to 1 minus n. Or we can also say that it is inversely proportional to C naught raised to n minus 1 minus n को n minus 1 कर दिया तो inversely proportional. And that's a very important result. I'll show you many questions today जिसमें इसको हम लोग बहुत ही frequently use करने वाले हैं. ठीक है, तो दिस इज वन जनरल रिलेशन. बाकी तो डिटेल में अपने पास इक्वेशंस हैं ये सारे, है ना. वी हैव फर्स्ट ऑर्डर, जीरोथ ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर का इक्वेशंस आर देयर, बट आई विल शो यू टुडे फॉर मेनी क्वेश्चंस इफ दे आर आस्किंग अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, आई विल शो यू ऑल दोस क्वेश्चन जिसमें इन सब की जरूरत ही नहीं होगी. बस इतना जानना है कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी नॉट. टी हाफ इज directly proportional to C naught in case of zeroth order. It is independent of C naught in first order, and it is inversely proportional to C naught in second order. इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होगा? कई बार वो तुमको देंगे कि इनिशियल कंसंट्रेशन अगर C नॉट है, वट एवर नंबर इज देयर, 1m, 0.5m, वट एवर इज देयर, फिर वो पूछेंगे C नॉट बाय 2 कितने टाइम पे होगा, या C नॉट बाय 2 इतने टाइम पे हो रहा है तो C नॉट बाय 8 कितने टाइम पे होगा. इस तरह का एक पैटर्न बार बार मिलेगा. आई विल शो यू लाइक दे विल नॉट गिव यू C नॉट के टर्म में, दे विल गिव यू नंबर्स लाइक 2 है तो 0.5 कितने टाइम पे होगा. 0.5 होना मतलब 1/4 होना, 2 का 0.5 हो जाना मतलब 1/4 हो जाना, 0.25 हो जाना इज 1/8 हो जाना, है ना. तो दैट पैटर्न विल बी हैंडल्ड बाय दिस रिलेशन. देखो क्या हो रहा है, अगर मेरे पास एक सीरीज में दिखा रहा हूं तुम्हारे सामने, और ये सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे. आई एम नॉट सेइंग कि ऑल द क्वेश्चन विल बी कमिंग फ्रॉम दिस सीरीज ओनली, बट इस सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे. सो लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सीरीज इन विच इट इज गेटिंग हाफ एवरी टाइम. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सीरीज, and this will go on. Okay, this is the concentration of A. Now in this series you'll be getting many reactions with given order, and most of the time you'll be finding that they'll be talking about first order, zeroth order or second order. ठीक है, हाँ. तो राइट नाउ विल डिस्कस दैट. अगर ये फर्स्ट ऑर्डर हुआ तो क्या, सेकंड ऑर्डर हुआ तो क्या, थर्ड ऑर्डर, जीरोथ ऑर्डर हुआ तो क्या. बाकी जनरल रिलेशन अपने पास ऑलरेडी है कि सी नॉट के हिसाब से टी हाफ कैसे चेंज होता है. तो इफ इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, in first order reaction we have seen that T half was independent of C naught, है ना. इसका मतलब whenever you want a reactant to half itself in terms of concentration, the time will always be C. And that's why if I'm talking about this conversion, if the time of this conversion is T1, for this conversion also it will be T1. For this conversion also it will be T1. This conversion will also take T1, T1 and T1. Is it okay? Because we are saying T half is not the function of C naught. Is it okay? If it is a zeroth order reaction, then we were talking about T half was directly proportional to C naught, because T half ka formula was C naught upon 2K. Na? That means it is directly proportional to C naught, which means if the time taken here is T naught, then we will say, यहाँ देखो C naught से C naught by 2 होने में this was the initial concentration. In this conversion, this has become the initial concentration, which is half of the initial one. तो अगर मैंने initial concentration को half किया है, and if T half is proportional to C naught, ये भी half हो जाएगा. So in this conversion, C naught by 2 to C naught by 4, it will take T naught by 2 times. In this conversion, it will take T naught by 4 times. This one will have C naught by T naught by 8. This will have T naught by 16, and this will have T naught by 32, and so on. But if the same reaction is of second order, where we were talking about that T half
is inversely proportional to C naught. If this time taken is T naught, this will become how much? Concentration half हुआ तो T half will become double of that, है ना? That is the meaning of inversely proportional, and that's why it will become 2 T naught. This will become 4 T naught. This will become 8 T naught. This will become 16 T naught. This will become 32 T. Is it okay? This is the, मैं बोलूंगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में आई गिव यू सेट ऑफ क्वेश्चन 8-10 क्वेश्चन करेंगे हम धराधर इसमें. So you will see that for that pattern of question we'll be using this series a lot, and उसके बाद बाकी conclusions भी देखेंगे, but this is first So, important result. हाँ, so in second order, so like the closer we are to like completion, lesser, more will be the time, so it yeah, will become more slower and slower, है ना? okay. Okay, we'll see that from graph also. But right now we are talking about simply with this series, the time taken to half itself becoming more if it is a second order. The time taken to half itself is becoming less when we are reaching to the completion. And in first order, it doesn't matter kahan se kahan ja rahe ho. If you are trying to get the uh, trying to make the concentration of reactant half of itself, it will take always the same time. Is it okay? Any doubt? Because इसके आगे क्वेश्चन ही करेंगे, भर भर के क्वेश्चन करेंगे. So Done. this in general that is not valid for first order, right? It is valid. This relation is valid. Whatever we have written here, na, for reaction with any order, this relation is valid. तभी तो ये यूज किया है ना. Because one रखोगे तो C naught से independent हो जा रहा है ना. I'm not talking about T half का formula. I'll be using this for first order also. I'll not use this. This Huh. formula is not valid. Right, right. The part that T half will be proportional to C naught raised to 1 minus n, that is also valid in first order, because in first order it is independent. So C naught raised to 1 minus n भी लिख दिया, so that is nothing, है ना? It is 1. Huh. Okay. Amazing. That's why this relation, which I have written in the important notes, is valid even for the first order. Is it okay? एक स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आगे जाकर बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग इसकी बेसिस पे करने वाले हैं. आई विल शो यू. क्वेश्चन दिखेगा अजीब सा, हो सकता है कि लगे कि फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, बट इफ यू नो दिस सीरीज और दिस आइडिया यू आर हैविंग ना, उसके बाद धनाधन सॉल्व होगा सारा क्वेश्चन. तो इवन इफ यू डोंट नो द इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर ना, ये कंक्लूजन आने के बाद ये सारे क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाएंगे. चलो करना स्टार्ट. सर सर हाँ एक सेकंड ऊपर जा सकते हो क्या? हाँ, 1 या दिस पार्ट ना. यस सर, डन. चलो अभी we'll start solving the questions based on this same thing. Now, कैसे पता चलेगा this type of thing is being asked? You will always see the concentration का change will be like half, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32th time, है ना? Okay, Manas has given some answer. Manas, you solve the second question.
जब तक बाकी लोग फर्स्ट करते हैं, इफ यू हैव डन इट, डू इट फॉर फर्स्ट ऑर्डर. नेक्स्ट टाइम मैं बोलूंगा सेम. Have I shared the complete screen? No, I don't think. Yes, sir, you have shared the complete screen. ऐसा है क्या? ओके. ओके. आंसर दिख गया था क्या? ओके. सो व्हाट्सएप पे भेजो। व्हाट्सएप पर मत भेजो, अब इतनी स्विचिंग नहीं चलेगी. सो मालूम नहीं कौन सा जूम पे। ठीक है, मैं दोनों देख ले रहा हूँ. नॉट अ प्रॉब्लम. या यू हैव गॉट द राइट. ओके, अभी तक जितने लोगों ने रिपोर्ट किया सबका राइट आंसर है. ओके, बेसिकली enough time given for this question. If you see, this whole thing is coming in this series. 2 से 1, 1 से 0.5, 0.5 से 0.25, 0.25 to 0.125. If it is coming in the same series, na, I'll not be worried about what was the equation. If it is a second order, we know that if the time here is 40 minutes, next time it will become, it was inversely proportional. That's why it will become 180 minute, 80 minute. It will become 160 minute, and this will become 320 minute. And that's why direct conversion is taking, this part is taking 160 minute. And if it is asking यहाँ से यहाँ जाने में कितना लगेगा, we will write the addition of that, and that is 480 minutes. Is it okay? That's why we'll be directly writing. इसका answer is 160 minute, and this will have answer 480 minutes. So after knowing this trick, you don't have to use even the equation कि क्या पढ़ा था second order में, क्या पढ़ा था first order. Okay, done? Any doubt? Anyone having any doubt? चलो यही काम, अगर सेम क्वेश्चन देखो, सेम कॉपी पेस्ट किया मैंने, एंड इफ दिस वर्क हैज टू बी डन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 2 to 1 to 0.5 to 0.25 to 0.125, and if it is a first order reaction, if time taken here is 40, then 40 will be at every place, है ना? यस। And that's why यहाँ से यहाँ का time will be 40, and यहाँ से यहाँ का time will become 80. Simple. So that's why 40 minute and 80 minute. Simple, na? Solve the next question. If it is zero order reaction, then what will you do? किसी को कहीं डाउट आ रहा है, रोक के पूछ लोगे. ऐसा नहीं कि बाकी लोग आंसर कर रहे हैं तो यू नॉट आस्क इट. इफ यू हैव डाउट, रोक लो, मेरे को पूछ लो. Sir, can you show the zero order reaction का trick again? ओके. जीरो ऑर्डर में इट विल बिकम हाफ एवरी टाइम. हाँ, yes, sir. So because T half was directly proportional to C naught, if you are making the initial concentration half of it, T half will also be half. Yes, sir. सर दोनों आंसर भेज दी. Okay. हाँ सर, जूम पे भेजा, आपको मिला? Okay. Yeah, I got it.
चलो जीरो ऑर्डर का करते हैं, काफी लोगों ने आंसर कर दिया है. Anyone who is still struggling with this concept, just tell me very frankly. जितने आंसर्स आ रहे हैं वो तो राइट आ रहे हैं. वेरी गुड. इस केस में आफ्टर नोइंग दिस ट्रिक यू आर नॉट डूइंग एनी मिस्टेक, दैट इज विजिबल. या पर राइट. सो बेसिकली इफ इट इज अ जीरोथ ऑर्डर, हम लोगों ने यही सीखा है that if this time is 40, this will become 20, this will become 10, this will become 5. So if they're asking you यहाँ से यहाँ का time, that is 10. If they're asking you यहाँ से यहाँ का time, that will become 15. Simple. So this is 10 minutes. This is 15 minutes. But while doing all these things, we need to be very careful about the order of the reaction. Order of reaction is the thing which is giving you different pattern of change of concentration with time, and that was the point I raised initially. If you remember, मैंने बोला था order of reaction governs the mathematical expression of change of rate or concentration with time. So देखो, same question, exactly every word is same other than the order of reaction, and I am getting different time for the same conversion, है ना? So that means it was the order which was governing the mathematical expression of concentration versus time. And we have seen that earlier also. If you see, यहाँ पे if I say concentration versus time in first order, it is coming exponentially decreasing curve. In zeroth order, C versus T, y equals mx plus c के form में fit बैठ रहा है. That means it is giving you straight line. And in second order, it is inversely proportional somehow आ रहा है. And that's why it is hyperbolic. We'll see that in graph also, and it is the order only which is deciding these different patterns. That's why I was telling you that point key order of reaction is going to govern the mathematical expression of concentration versus time or rate versus time. Okay, चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन करो. इस अभी तक कोई डाउट, एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? इफ नो डाउट देन सॉल्व दिस क्वेश्चन. क्रिश, ओके, राइट. या मानस राइट है, योर आंसर इज ऑल्सो राइट. यस परम, यू आर ऑल्सो राइट. यूषा, कुछ गड़बड़ किया तूने. सर रेट का फॉर्मूला क्या है? रेट इनिशियली पढ़ा था ना हम लोगों ने, देखो एकदम बिल्कुल स्टार्ट में. रेट के दो फॉर्म पढ़े हम लोगों ने, माइनस डी ए बाई डी टी,
k into a raised to n. That was the second formula. Third formula will be coming, जो बाद में हम लोग देखेंगे इसको. Once you have got the concentration as a function of time, तो a raised to n की जगह a का मतलब c है, concentration c है ना, तो उसका वैल्यू रख लोगे तो you will be getting rate directly with time, है ना. You have to find out कौन सा expression carry कर. सर किसी एक ऑर्डर का रेट कांस्टेंट रहता है, हाँ जी, किसी एक ऑर्डर में रेट कांस्टेंट रहता है. rate is not constant. अच्छा, किसी एक ऑर्डर में पूछ रहे हो? यस, जीरोथ हाँ, ऑर्डर में it was जीरो constant. ऑर्डर में. जीरोथ ऑर्डर में देखो ना, दिस एक्सप्रेशन विल गिव यू a रेज टू 0 कर दिया तो कंसंट्रेशन ही गायब हो जाएगा ना. So that means rate will become equal to rate constant, and that's why it will be constant in zeroth order. Param, I have not given you k as a rate constant. That is your assumption that k you are writing. There is nothing called k in the given question. हाँ सर, हाँ सर. सो कुछ के समझ नहीं रहा था तो मैं ऐसे ही भेज दिया. But you have to find it out. हाँ सर, हाँ सर. Nandita, you are writing the answer of the first one or second one? So first one, First one, it is asking the time. Are you sure that it will be that less? I don't know, so that's why I got the answer. I just sent it. I'll redo the That's question. not right. That's not right. Yusha, I don't think you are right. सर दोनों की सेकंड वाला, दोनों की सेकंड वाला. 1 minute, let me see. First वाला किधर भेजा था? जो तूने इधर भेजा. नहीं, first is right, second one is. नहीं क्रिस, तेरा भी आंसर सही नहीं दिख रहा है. सर ओके का यूनिट क्या? क्लोज है, It is the क्लोज है, first. हाँ जी क्रिस. क्लोज है. सर के का यूनिट क्या होता है? ये का यूनिट पूरा टेबल बताया था मैंने. सर एक और बता दूंगा. चल मैं तेरे को रिवाइज करवाता हूँ के की यूनिट. हाँ, किधर किया था? इधर देख, इधर. अभी पुराना याद करके नहीं आएगा तो गड़बड़ है. मैंने ट्रिक बताया था इसका ना, हाउ टू कैलकुलेट. देखो राइट साइड में पूरा कैलकुलेशन करके बताया था. इट वाज मोल पर लीटर रेज टू 1 minus n and then per unit time. Okay, let's see, enough time given. It says 0.1 to 0.025. If I'm getting a pattern ना, देखो ये 1/4 कर रहा है अपने आप को, है ना, and that's why I'll follow the pattern that 0.1 to 0.05 and then 0.025, है ना. And we have learned that whatever time will be spent here, same time will be spent here if it is a first order reaction, है ना. That's why यहाँ से यहाँ का time will become 2x, and they have given you 2x is nothing but 20. It means x is 10 minutes. इधर तक आया, फिर इसके बाद समझा नहीं पैटर्न क्या. Now, in first order, this is half life, and half life will always be same, है ना. So we are saying x is nothing but a t half irrespective of the concentration.
because in first order it was independent of concentration. And that's why if I have to go from first question के लिए, if I have to go from 0.08, it doesn't matter कहाँ से जा रहे हैं. But if I'm going from air to air, it will always take 10 minutes. And that's why going from air to air will take 30 minutes. Simple. That's one part. The second part is it is asking you rate of reaction. We know that rate of reaction was K into A raised to N hota tha. Now, if we just know the value of K, तो काम हो जाएगा ना. And if you remember, मैंने बताया था this was 0.693 or ln 2 by K है ना. That means K is 0.693. 0.693 upon 10 per minute. And that's why this will become 0.693 upon 10 into 0.01 raised to 1 because it is first order. That's why it is coming 0.693, which is ln2 also, into 0.001, or you can say 6.93 into 10 raised to minus 4. And the unit is mole per liter per minute. Always take care of the unit. Per second kar denge to answer will be divided by 6. So this much mole per liter per minute. That will be the answer. So first ka answer is 30 minutes. And second ka answer is rate will be 6.93 into 10 raised to minus 4 mole per liter per minute. Any doubt? सर हाँ जी. रेट का यूनिट चेंज नहीं होता, रेट रेट का यूनिट चेंज नहीं होता है. हाँ, रेट का यूनिट कब चेंज होगा? मैं मोलरिटी की जगह पार्शियल प्रेशर ले लिया गैस फेज रिएक्शन में, तो जहां मोल पर लीटर दिख रहा है वहां एटीएम, दैट्स ओनली चेंज. बट अदरवाइज रेट का यूनिट इज ऑलवेज मोल पर लीटर पर यूनिट टाइम. टाइम कैन बी मिनट सेकेंड, वो हो सकता है, बट रेट इज नॉट गोइंग टू चेंज. K will be changed according to the order of the reaction. Okay. Any So the doubt? concentration of A over here is like What? the concentration of A over here is like the It is final given. one. It is given na 0.01. Tell me the rate when Oh, concentration. okay. That was given. If it is a zero order reaction, then concentration doesn't matter because rate was equal to K. But one formula of K will include, formula of T half will include C naught. है ना? Okay. Just see the next question. If I give you this. So nth ऑर्डर का फॉर्मूला दिखा सकते हो? 1 minute. पूरे फॉर्मूला की जरूरत नहीं है. If you know this part. This is done. I'm coming in 1 minute. Yeah.
Any answer? If you need root 2, I'll give you the value. Root 2 is 1.414. मानस नेगेटिव टाइम कैसे हो सकता है? Chris, your answer is not right. सर वापस भेजा है. Then it is right. Yes. Very close to the real answer. वो पॉइंट में आ रहा है इसलिए. हाँ चलेगा चलेगा, that's okay. The integral part is right. उसके right वाला मुझे भी exact याद नहीं है कितना answer. Param, your answer is not right. Sir, I just wanted to ask कि like the lectures you are taking right now are optional, right? तो का मतलब देखो, ये तुम पेस वालों के कारण ही मैंने रखा है कि यू आर हैविंग अ लीव दिस वीक, हॉलीडे दिस वीक, एंड यू आर हैविंग आई थिंक नेक्स्ट वीकेंड पे काइनेटिक्स का यू आर हैविंग द ये ना टीडब्ल्यूटी इज देयर ना. हाँ सर. दैट्स व्हाई थॉट कि इसी बहाने एक चैप्टर भी हम लोग खींच लेंगे. क्या निश्चित, यू हैव गॉट द राइट आंसर. दैट वाज द पर्पस. सर तो like how are you gonna cover up for those जो नहीं attend कर रहे? Because I think बीच में एक या दो दिन मैं भी नहीं हूँ. देख, अभी अगर बीच में नहीं है तो फिर यू सी द रिकॉर्डिंग सो दैट यू कैन अटेंड द नेक्स्ट लेक्चर, है ना. सो इफ यू हैव कंटिन्यू ना, तो इसको छोड़ लूज नहीं करने का है. So if you are getting and just get the recording, watch it, and whatever doubts you are having, ना just ask it. ठीक है. The purpose is कि अभी अगर continue किया ना, somehow try to finish it. Otherwise, I'll see that कि जब बच्चे आ जाएंगे, then what is the time slot available for the remaining people? उसके बाद फिर उसके हिसाब से will cover, है ना. This was just an opportunity कि I've got Chris, your answer is not right. देखना तेरा आंसर कम कैसे हो जाएगा. सर मैंने भी भेजा, देखो ना. Okay. Trusha has got the right answer. Yusha नहीं, not right. सर राइट मैंने नहीं, बार राइट. बार बोला है रीजनेबिलिटी ऑफ द आंसर जरूर चेक करने को. हाँ, नाउ यू आर राइट. अंडरस्टूड ना मिस्टेक. रीजनेबिलिटी ऑफ द आंसर हमेशा चेक करना है. 2 से 1 जाने में अगर 16 लग रहा है, तो 2 से 0.5 जाने में तो 16 से तो ज्यादा ही लगेगा. Sir, is my answer right? वेयर हैव यू सेंट? लेट मी सी. इधर नहीं, इधर भेजा लगता है. ओके, लेट मी सी. नंदिता नंदिता नंदिता. नो 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 नो, योर आंसर इज नॉट राइट.
Param, still your answer is not right. Okay, let's see. I'll show you other two methods. Yusha, still you are not right. Okay, I'll tell you. First thing, it is not first order reaction. It is half order reaction. Now I'm having two ways. One is to go by the traditional method कि half order reaction में concentration versus time का क्या formula होगा, that I want to know, and then we can find out कि यहाँ से यहाँ का change कितना होगा. That's one method. I'll show you that method also. But first let's go by the trick. Let's go by the trick because I'm having this pattern 2, 1.5. They are coming in the same series. So let's go by the trick. Can we handle it by a trick? So I told you T half is proportional to C naught raised to 1 minus n. For this relation, this time T half will be proportional to C naught raised to 1 minus half. That means half. Is it okay? So if concentration is becoming half, then this will also become 16 upon root 2. Na? Is it okay? ये explain कर सकते हो आप? See, T half is directly proportional का मतलब है, थोड़ा डिटेल में दिखा रहा हूं. This will be C naught final upon C naught initial raised to half. Is it okay? This part हाँ. clear है? That means I'm talking about this T half. यहाँ से यहाँ जानना चाहते हैं और वो जैसे ही आ जाएगा we can add it to get this one, है ना? Yes. So that means the second part of T half, that means this part 1 2.5 वाले के लिए, this will be equal to this much, and final is C naught by 2, and initial C naught is C naught. That much. So That 16. means the second T half, 16 was the 2 to 1 वाला ना. तो फिर चलो इधर इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ. I'll write it like when initial concentration was 2, then the T half was 16. When it becomes 1, then T half will be how much? That is the relation. okay. And that's why we'll be saying it will become 16 by root 2. Now, if I have to get the time from 2 to 0.5, we'll write 16 plus 16 by root 2. That will be the answer. If you want to simplify it, root 2 से ऊपर नीचे multiply कर लो, you'll be getting 8 root 2. And that is 16 plus 8 into 1.414. And that will give you very close to 27.3 जैसा कुछ आ जाएगा. Okay. So this will be the answer. Now, if I'm not comfortable with this trick, then what I have to do? Just see, this is method 1. Second thing is always go by the C versus T. Just find out that. मैंने नहीं बोला है तुमको रट्टा मारने का है. And the point was कि if I have to solve any order which is not zeros first or second, then I'll write minus dA by dt will be equal to k times a raised to half in this case, है ना? Is it okay? Because it is half order reaction, and that means I'll be writing minus 1 by, या फिर इसको सीधा इधर ले आकर a raised to minus half लिख देता हूँ. So we'll write a raised to minus half dA will be equal to k dt. And now k dt तो kt ही बनेगा आगे जाकर, but if you want to integrate it, we'll integrate it like 0 से t, so this will become c naught से c. And for this integration, we'll be getting minus sign, and then ये देखो c a raised to half by half हो जाएगा. That means it will become 2 c raised to half minus 2 c naught raised to half. I'm just doing the integration, and that will become k. And that's why it is becoming 2 times root c naught minus root c is equal to kt. Is it okay? So this is the relation, or we can say root c naught minus root c is equal to kt by 2. This is the relation for half order reaction. Now I've got two data. 2 से 1 का time is given 16 minutes, and it is asking 2 से 0.5. So
We are writing when it was 2, say 1, then the time was 16. So that gives you the value of k, which will become root 2 minus 1 by 8. And then it is asking when you want to say 0.5, what will be the time? We will write this one. And then we know that k ka value is given. So root 2 minus 1 by root 2 is equal to k ka value is root 2 minus 1 by 8 times t by 2. And then t will become, ये देखो 2 minus 1 1 by root 2 हो जाएगा. So this becomes 16 upon root 2 into root 2 minus 1. That gives you 16 upon, this is 2 minus root, है ना? इसको simplify कर लोगे, you'll be getting the same value. 2 plus root 2 से ऊपर नीचे multiply कर. This will become 16 into 2 plus root upon, this will become 4 minus 2. And that's why it will become 16 by 2 is 8 times 2 plus root 2. वही तो आया था देखो, 16 plus 8 root 2. हाँ, समझिए. So this is the traditional method, but इतनी मारामारी करने की बजाय if we have got that idea, थोड़ा सा effort लगेगा इसको practice में, but if you get this idea, तो देखो कितना simple. Is it okay? So this is the method one, which is by trick, and this is second method in which you have to go by the first principle that you do the integration, you get the order. Because मैंने अभी half order दिया, they can give you 2 by 3, 1 by 3, है ना? तो फिर उसमें हर बार निकालना पड़ेगा, and you are not supposed to remember all those results जो पहले मैंने in general दिया था. इतना याद करने की जरूरत नहीं है. It will be just one question. When you are solving a chapter का question तो बहुत सारे question मिलेंगे, but final exam में ऐसा तो नहीं है कि 4 question इधर से same topic से same concept से देंगे. They will not give. We have that much time कि we can solve it. Okay. चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ, which will look like कि क्या करना है, but I'll give you the trick for that also. Yeah, this is the question. अभी तक जो मैंने बताया था, it was just having one reactant with coefficient 1. Right now you have got two reactants, A and B. Do you have a shortcut, or should we follow the basic principle that is written rate equals K into A raised to half, B raised to half? You can follow both the methods. Just try to find out. So this will be a first order reaction, right? Overall, it is a first order reaction, yes. But it is half order of reaction with respect to A is half and with respect to B is also half. It is not first order with respect to A. It is not first order with respect to B.
Okay, Tusha, I think you have got the right answer. Yes. Yeah, Manas, you have also got the right answer. Yeah, Param, you have also got the right answer. But Nanta, I have given you the options, hai na? So I don't think your option is matching. Your answer is matching with any option. Yes, sir, it's not. Okay, enough time given. Let's say I'll give you two methods. Method one, can we have some trick? Anyone who has applied a trick? Like I'm not going by the basic fundamental principle कि पहले integrate किया and फिर उधर गया. Anyone having any other method? सर ओवरऑल ऑर्डर सर 1 ले लिया. Okay, overall order one है. Okay. सर तो टी इसको हाफ निकाल सकते हैं ना फिर? नहीं ना, हाँ नहीं ना, क्योंकि A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर इज नॉट वन, B के रिस्पेक्ट में ऑर्डर इज नॉट वन. सर आंसर तो आ गया. फिर वही गड़बड़ कर दिया ना तुमने. व्हाट आई एम सेइंग कि यू शुड हैव अ लॉजिक. सर समझा नहीं, मतलब रॉन्ग है. व्हाट आई एम सेइंग, overall order is one, but the formula which we have learned was based on कि if you are having just one reactant, है ना? सर लाइक एज्यूम कर सकते हैं ना कि बी सॉलिड है. नहीं ना, लाइक that is not given. फिर तो ऑर्डर हाफ Sir, हो जाएगा. फिर तो ऑर्डर हाफ हो जाएगा. क्या त्रुषा? like you can take both, like you can I can. add molarity of both. Your voice is breaking. You can like take both together, like in the starting you can add like molarity of both of them. And why is that? Because then एक साथ they'll become a first order reaction. Individually they have them. एक ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया था केमिकल इक्विलिब्रियम में, एंड in that case I told you if the initial is same and if the coefficients are same तो consumption will be same, and that's why at any time A and B will be having same concentration, है ना? Is it okay? एक ऐसा क्वेश्चन मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम में करवाया था जहां A प्लस बी गिविंग C प्लस डी था, और बोला था इनिशियली A इतना, A और B दोनों इतना है,
finally C is becoming at equilibrium, C का concentration is double of the A, ऐसा कुछ मैंने बताया था. Then I was asking K equilibrium कितना है. That type of question was there in chemical equilibrium. I'm telling you here, if you see, reaction is A plus B giving C plus D, and initial both are same. This was 1, this was 1, this is 0 and 0. At any time t, if I am writing कि ये अगर 1 minus x होगा तो this will also be 1 minus x है ना. Is it okay? Clear है? तो we can say at any time A is always equal to B. And by that logic ये valid नहीं होता अगर coefficient was not same or mole was not same. Or in general, if molar ratio is not same as the coefficient का ratio, तो फिर ये काम नहीं कर सकते हम, है ना? And that's why we are saying कि mole भी same रहे और coefficient भी same रहे, then only we can say A is equal to B, and then we can write rate was K into A raised to half into B raised to half. I can replace B by A. Understanding ना? अगर मैंने यहाँ 1 and 2 दे दिया होता ना तो फिर ये ट्रिक नहीं लगता. If I'm giving you A is 1m, B is 2m ना, then this trick will not be valid. तुम्हारा आंसर wrong हो जाता है. In fact वो 600 सेकंड फिर नहीं आता. Now I can write practically. Math doesn't know कि मैंने A की जगह B की जगह A कर दिया है, because A is same as B. And that's why now I can write rate is K times A raised to 1. Understanding the point now? Now पीछे का क्या किया है भूल जाओ. We are having this expression, and for this expression we know that T half was 0.693, or we can say ln2 upon K for the time being. Is it okay? And then we are writing this was 2.303 log 2, and this is 2.303 into 10 raised to minus 3. So that becomes 300 seconds. And then it is saying कि 1 से 0.25 होने में कितना टाइम लगेगा. We know that if this part is 300 seconds, this will also be 300 seconds, and that's why 1 से 0.25 will take 600 seconds. Is it okay? Sir, but we can't apply the nth formula like time only for A. नहीं ना, because B is also there. That is disturbing the equation, है ना? We can't write minus dA by dt is equal to K into A raised to half on, because B raised to half is also appearing in the rate का expression, है ना? Yeah, and suppose if the reaction we change, like suppose 2A plus B, then we can't use this trick, right? No. Even then we have to go by the basic principle. ये जो मैंने दिया है ना, A, B initially same and the coefficient is also same, then only this trick is applicable. Otherwise, we have to go by the fundamental method, and that says I'm writing that same method, and that will be valid everywhere. But most of the time they want you to solve the question in 2 or 3 minutes, and that's why they'll be giving you these type of questions only. अगर नहीं देता तो मैं क्या लिखता? Minus dA by dt, which is the rate, will become K into A raised to half, B raised to half. And now if you see the expression, it says minus dA by dt will be K times 1 minus x raised to half into 1 minus x raised to half, and this will become dx by dt, है ना? 1 minus x का डिफरेंशिएशन करो ना, तो वो minus dx by dt हो जाएगा, माइनस करके this will become dx by dt, है ना? So this part will become dx by dt, and this will become 1 into 1, K into 1 minus x, and then integrate it. सर dx by dt कैसे हुआ? 1 minute. हाँ, see, A is 1 minus x at any point of time. So dA by हाँ. dt becomes
minus dx by dt. So that's why minus dA by dt becomes dx by dt. Yes, sir, समझ गया. Now we have got, अभी इसी में पूछ रहा है कि the concentration of A will become 0.25. So initially it is 1, finally it is 0.25, and initial time is 0, and we have to calculate time t. है ना? And we can solve it कि x, अच्छा, sorry, x का value is not 0.5, 0.25. When it is becoming 0.25, the consumption is 0.75, है ना? Initial consumption was 0, final consumption is 0.75. Is it okay? क्योंकि x में कर रहे हैं इंटीग्रेट, है ना? So can you explain the limits again? Yeah. If you see initial, it was 1. It says in how much time A plus B giving C plus D. सिर्फ A में काम करते हैं. Initial, it is 1. And in general, I have told you A is 1 minus x. So initially, what is x? 0. 0. So which is 1 minus 0. At time t, when we are saying it will become 0.25, we can write now it is 1 minus 0.75. So x ka value initially was 0. Finally, it is at time t, it is 0.75. Is it okay? Yes, sir. Then you can integrate it. So this will become ln, और minus है तो minus रखना पड़ेगा. Then we'll have 1 minus 0.75 upon 1 minus 0. And that will give you k times t. And then if you solve it, this is the second method. But this method will always work. If they have given you, initially mole was A and B, जो है ना वो 1 and 2 आ जाए. So we can solve this by this method. So T will become 1 by K, and minus को अंदर कर लो तो it will become ln 4, I think हो जाएगा ना. That is 2 log 2 into ln 2 upon, this is 2.303 into 10 raised to minus 3. And that gives you 2 times 2.303 times log 2, which is 0.3 upon this thing. So that will give you 600 seconds. Is it okay? So this was a mathematical method which will always work, but in the exam they are trying you to give a question which can be solved within 3, 4, max 4 minutes. उससे ज़्यादा नहीं देना चाहते. And that's why they'll be giving you a question like this in which you can apply that trick. So even if I give a raised to 2 by 3 and b raised to 1 by 3, ना ये question पहले method से solve. Is it okay? Sometimes they'll be giving you 2 by 3, a by 1 by 3, or they may give you 2 and minus 1. Even then it will become valid because a and b was initially equal, and because coefficients are equal, so finally will also be equal because the consumption will be equal. Initial equal, consumption equal, so final will be equal. Hai na? And that's why b can be replaced by a directly, and we have got the a may first order directly mathematically. It is not exactly first order in a, but mathematically we can replace it like it is working like mathematics is working like it is in first order with respect to a. Is it okay? Clear now? चलो एक क्वेश्चन और दे देता हूँ हाफ ऑर्डर का, देन विल मूव फॉरवर्ड फॉर द सेकंड इंपॉर्टेंट नोट. ये क्वेश्चन दे दिया. अब इसमें कोई ट्रिक व्रिक नहीं लगेगा. हाँ, थोड़ा सा पार्ट एक है, बट आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि कैसे इसका कैलकुलेशन करना है. एक कैलकुलेशन ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग, तो ये लिख देता हूँ मैं. सी दिस वाज द कैलकुलेशन, है ना. वी हैव ऑलरेडी रन फॉर हाफ ऑर्डर, है ना. आई विल जस्ट राइट इट फॉर द टाइमिंग, क्योंकि वो कर लिया हम लोगों ने. सो दिस वाज ऑलरेडी वी नो दैट फॉर half order reaction, and that reaction is A giving B जैसा कुछ. यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था रूट सी माइनस रूट सी नॉट वॉज के टी अपॉन, है ना. ये ऑलरेडी कर लिया हम लोग, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ. अदरवाइज यू हैव टू डू इट फ्रॉम द स्क्रैच.
Tell me, it is like integer type of question. How many of the following are correct statements? But you have to find out कौन सा correct. Sorry, ये root C naught होगा, ये C. This is C. ऐसा नहीं कि हर जगह ट्रिकी चलेगा, but most of the time you'll be getting a question like in which tricks will work. यही जिसको मैंने C नॉट लिखा, इन्होंने A नॉट लिखा. One by one बताओ. First one, is it right? Yes. Yes, sir. Because you can write root C is minus KT by 2 plus root C naught, है ना? I've just readjusted it. So minus K by 2 into T plus root C naught. देखो ना, ये अगर y लिया और इसको अगर मैंने x लिया तो y equals mx plus c जैसा आ रहा है. And that's why root A versus T will be linear. What about half life? हाफ लाइफ के लिए क्या करते थे? C की जगह what to write? C की जगह C naught by 2. C naught by 2, and that's why we'll be writing root C naught minus root C naught by 2 will be K by 2 into T half. And that's why T half will become 2 by K times root C. अगर common ले लो, we are getting 1 minus 1 by root. And if you simplify it, देखो हो जाएगा root C naught by K into a root 2 times root 2 minus 1. Is it okay? And that's also right. थर्ड वन तो दिख ही रहा है यहीं से, थर्ड एंड Right फर्स्ट है. एंड थर्ड तो यही किया है ना, दोनों के लिए यही सेम एक्सप्रेशन है. सो वी हैव गॉट दिस रिलेशन, तो ये भी राइट है. व्हाट अबाउट द फोर्थ वन एंड द फिफ्थ? सर Total ऑर्डर is पता है? ऑर्डर पता है ना, यहाँ से सारा काम कर लिया तू, अभी पूछ रहा ऑर्डर पता है? हाफ ऑर्डर रिएक्शन के लिए तो सारा काम कर रहे हैं ना. यस सर, क्या यस था? सर, वो देखा नहीं, वो वही देखा ही नहीं मैंने, वो रेट लो इतना एक्सप्रेशन. सारा लिख दिया मैंने तब नहीं देखा. ओके, अभी तक क्लियर ना? फोर्थ वन के लिए भी इफ यू सी जस्ट द क्वेश्चन जो हम लोगों ने सॉल्व किया था ना, यहाँ पे इफ यू सी पहला टाइम 16 आया था, दूसरा टाइम 16 बाय रूट 2 आया था ना, तो नेक्स्ट हाफ लाइफ वाज लेस ना, वो 11.3 जैसा कुछ आ रहा है. पहला वाला 16 आया था तो दूसरा वाला 16 बाय रूट 2 आया था. एंड दैट्स व्हाई इट सेज टाइम टेकन फॉर रिएक्शन इज डिक्रीज्ड फॉर सेकंड हाफ लाइफ देन द फर्स्ट हाफ. इज इट ओके? एंड दैट इज राइट, है ना? इज इट ओके? क्या मैंने बोला था, यहां से सी नॉट बाय 2 का टाइम अगर कुछ टी था, तो यहां से सी नॉट बाय 4 का टाइम टी बाय रूट 2 था, which is less than t, and that's why this statement is also correct. What about the fifth one? कंसंट्रेशन डबल किया तो रेट 4 टाइम्स होगा क्या? नहीं, No. रूट 2 टाइम्स होगा ना. root 2 times. कंसंट्रेशन में 4 टाइम्स करूंगा तो रेट विल बिकम रूट 2 टाइम्स, है ना. सो दिस इज रॉन्ग. दिस शुड बी रूट 2 टाइम्स, एंड दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग. Okay, तो only 4 statements are correct. Is it okay? So ऐसा नहीं कि हर बार ट्रिक ही काम करेगा. They may give you an independent question जिसमें you are supposed to do the calculation from the scratch, and then you can have all these confusions. Is it okay? Clear ना सबको? Yes. चलो, अब आते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट नोट पे, एंड दैट नोट अगेन विल अभी इससे रिलेटेड जेई ने पूछे, पहले भी पूछे हुए क्वेश्चन, आगे भी पूछेगा.
That second note is, and it will be particularly about first order and zero order, क्योंकि उसी से क्वेश्चन को मोस्टली मिलेंगे. What does it say? It says, देखो ना, अगर हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर की बात की थी, तो हमारे पास क्या आ रहा था, ln c नॉट बाय c वॉज इक्वल टू kt, है ना, यही था फॉर्मूला ना. एंड नाउ वी नो दैट k डजंट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन, है ना. k का वैल्यू इज रेट कांस्टेंट विद डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर और द यूज ऑफ कैटलिस्ट, but it doesn't depend on the concentration, and that's why for if it is a first order for given time, c naught by c will be same, है ना. t सेम रखा तो ln c naught by c भी सेम हो गया, तभी तो k will be constant. Can we say k is nothing but ln c naught by c upon t. तो टाइम सेम रखना होगा तो फिर ये भी सेम रखना होगा ना. So in same time interval, if you are getting same fractional change, then it is definitely of first order. तो दो कहानियां हैं. If they have given you the order, we have to apply this formula. If they have given you the data like concentration time के साथ ऐसे vary कर रहा है, which is an important type of question in this chapter. So वो क्या करेंगे ना, टाइम दे देंगे और बताएंगे concentration of A is changing with time like this, and they'll give you a pattern, and you're supposed to know the order of the reaction, and then only you can do any calculation. So in that case, we have to identify whether the fractional change is same or the change is same. When I say fractional change is same, it means अगर ये c नॉट से c नॉट बाय x, then c नॉट बाय x स्क्वायर, then c नॉट बाय x क्यूब, ऐसा कुछ हो रहा है और टाइम सेम लग रहा है, तो फिर ये फर्स्ट ऑर्डर का है. फर्स्ट ऑर्डर में यू विल गेट अ पैटर्न लाइक दिस. तो जीपी बनता है ना. हाँ, तो इट और इज जीरो बेसिकली ऑर्डर में एपी. सेम फ्रैक्शनल चेंज. बट इफ इट इज अ जीरोथ ऑर्डर, चलो इसको मैं T1 बोल देता हूँ, तो एवरी टाइम इट विल हैव सेम टाइम. और ये देखो ना, x की जगह 2 लिखा था तो t वॉज t हाफ, है ना. x की जगह 2 लिखा था, हाफ होने में t हाफ लगता था, नेक्स्ट टाइम भी सेम टाइम लगता था, उसके नेक्स्ट टाइम भी सेम टाइम लगता था. बट इफ आई एम सेइंग c नॉट से c नॉट माइनस y हो जाए, एंड देन c नॉट माइनस 2y हो जाए, c नॉट माइनस 3y हो जाए, एंड देन so on, and if that takes same time, t naught, t naught, t naught, t naught, then we will say it is of zeroth order. Are you getting the pattern? Is it okay? Like I'll give you an example. दो cases दे रहा हूं मैं. अगर मैंने बोला c नॉट से c नॉट बाय, ये चलो नंबर्स के साथ बात करते हैं. अगर मैंने बोला कंसंट्रेशन ऑफ A जो है ना, वो पहले c नॉट था. हाँ, c नॉट चलो नंबर दे देता हूँ. पहले ये 3m था, अभी ये 1m हो गया, फिर ये 1/3m हो गया, फिर ये 1/9m हो गया, एंड यहाँ पर अगर 10 मिनट्स लगता है तो यहाँ भी 10 मिनट्स लग रहा है, यहाँ भी 10 मिनट्स लग रहा है. व्हाट इज द ऑर्डर? First order. फर्स्ट ऑर्डर, बिकॉज फ्रैक्शनल चेंज इज सेम इन द सेम टाइम इंटरवल, है ना. तो विल से दिस इज फर्स्ट ऑर्डर. बट इफ आई से कंसंट्रेशन ऑफ ए स्टार्टेड विथ 3m से 1m हो रहा है, हाँ सॉरी 1 तो डायरेक्ट नहीं हो पाएगा, मान लो यहाँ से 3 से 2.7m हो रहा है, देन 2.4m हो रहा है, then 2.1m हो रहा है, and that is happening in the same time. like यहाँ पर 5 मिनट लग रहा है, यहाँ भी 5 मिनट लग रहा है, यहाँ भी 5 मिनट लग रहा है. then what is the order of this reaction? Zero order It reaction. is zeroth order because the change is same. You understand the word fractional change and change? Are you getting that point? fractional change means same factor से change, 1/3 हो रहा है तो फिर से 1/3 हुआ same time. so that is first order. if the change मतलब difference is constant, not the fractional change, the difference is constant in same time, then it is zero. Is it okay? Clear a point? Anyone having any doubt in this pattern?
और ये पैटर्न भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, इनफैक्ट जेई के पूछे हुए क्वेश्चंस को भी सॉल्व करवा देगा तुम्हारा. सो लाइक इफ आई गिव यू अ क्वेश्चन this one. Solve this question. ये तो मैंने जानबूझकर एक ऐसा क्वेश्चन दिया है जिसमें यू हैव टू एक्सप्लोर द थिंग्स, बट अदरवाइज दिल गिव यू अ पैटर्न. टाइम का डिफरेंस ना नॉर्मली यू विल बी सेइंग कि 0 मिनट पे इतना है तो 10 मिनट पे इतना है तो 20 मिनट पे इतना है, तो टाइम इंटरवल वो हमेशा सेम देंगे. यहाँ यू हैव टू सर्च फॉर, आर यू गेटिंग द सेम टाइम इंटरवल एनीवेयर? No. हम्म, No. यस सर. कहाँ पे? कहाँ मिल रहा है? One सर and वो फर्स्ट एंड सेकंड और थर्ड और फोर्थ. हाँ, इन दोनों के बीच का गैप इज 2 मिनट एंड इन दोनों के बीच का गैप इज ऑल्सो 2 मिनट. 6/3 इज 2 ओनली, है ना. Now, अब ऑब्जर्व करो इन दोनों का फ्रैक्शनल चेंज सेम है या चेंज सेम? Change. चेंज, क्योंकि यहाँ का डिफरेंस 0.3 है. डेल्टा सी इज 0.3 है ना, माइनस डेल्टा सी से बिकॉज डिक्रीज. यहाँ भी माइनस डेल्टा सी इज 0.3. दैट मीन्स डिफरेंस इज सेम. फ्रैक्शनल चेंज देखोगे ना, तो यहाँ से यहाँ इफ यू से इट इज बिकमिंग 7/10 टाइम्स एंड दिस इज बिकमिंग 2/5 टाइम्स, विच आर नॉट सेम, है ना. सो दिस इज नॉट सेम, दिस थिंग इज नॉट सेम. बट डिफरेंस इफ यू सी 0.3 का रहा है, तो ये कौन सा ऑर्डर हो गया? so zero order. If you see in this question, they have not mentioned the order, है ना. In this type of question, we are supposed to know the order. So we are saying for same time interval, change in concentration, not fractional change. Concentration is same, hence it is of zero thought. And इसके बाद जो कहानी पढ़ी है उसको अप्लाई कर देना. Hence it is a zeroth order reaction. और उसके बाद it is asking you half life batao when concentration is this one. And concentration becomes important here because if you remember half life of zeroth order, for zeroth order half life was the function of c naught. It was c naught by 2k. What will the answer? ये सब इंटीजर टाइप के आंसर्स आते हैं. मिनट्स में पूछा है एंड टाइम वाज गिवन इन मिनट. नॉट टेल मी. एनी आंसर? क्या मिसिंग है? के के मिसिंग है. और के कैसे निकालेंगे? वी हैव गॉट द रिलेशन ना, जीरो थॉट में सी नॉट माइनस सी वाज के टी, है ना. Nishita answer is not right because I have already told you that it is an integer type of question. Yes, Trusha का आंसर इज राइट. दो चीजें पढ़ा था हम लोगों ने, ये भी पढ़ा था और ये भी तो पढ़ा था. सी नॉट माइनस सी वॉज के टी, इसको लगा दो. सुनाओ, कोई भी एक डेटा उठा लो, कोई भी एक डेटा उठा लो तो गिव यू द वैल्यू ऑफ के माइनस योर आंसर इज नॉट राइट. कोई भी एक डेटा 0 से 2 का ही उठा, तो 0 पे कंसंट्रेशन वॉज सी नॉट, 2 मिनट्स पे दिस इज 0.7 and that will be equal to k times 2, and that means k becoming 0.3 by 2, which is 0.15. Is it okay?
और जैसे k का वैल्यू मिल गया, अभी t हाफ निकालना आसान है, सो विल से t हाफ, यस क्रिश योर आंसर इज राइट, दिस इज 0.6 अपॉन 2 टाइम्स 0.15 and that becomes 2 minutes. Is it okay? Understood na? Any doubt? So this is the question you should keep in revision so that you can identify whenever you are having confusion. Why I called it zeroth order reaction? Because I have found out two set of data in which same time interval was giving me same change in concentration, not fractional change. It was having same change in concentration in same time interval, and that's why it is zeroth order reaction. And now with zeroth order reaction, C naught minus C was KT and T half was C naught by 2K. तो कोई भी एक डेटा उठा लिया, C naught का वैल्यू 1 रख दिया, C का वैल्यू 0.7 रख दिया, T का वैल्यू फॉर दैट टाइम was 2 minutes, and that's why K का वैल्यू निकाल दिया. After getting the K का वैल्यू, we have got T half का फॉर्मूला C naught by 2K. They are asking you T half तब बताओ जब concentration is 0.6. So 0.6 upon 2K will be the T half when C naught is 0.6 के है ना? Is it okay? चलो next question. इसमें कहीं भी डाउट है तो आस्क मी, अदरवाइज दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन. सर अगेन फर्स्ट ऑर्डर में जीपी में होता है राइट? फर्स्ट ऑर्डर में जीपी में होता है. कंसंट्रेशन सेम टाइम इंटरवल में इट विल बी इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. ओके, और इन जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन सेम टाइम इंटरवल में इट विल बी इन एपी, है ना? यस. इसी का एक और पार्ट कर देता हूं. दिस इज फर्स्ट पार्ट. सेकेंड इज if T 90% is 60 minutes, calculate T half. सो ये टेस्ट के मॉड्यूल में सही है. ऐसा मिलेगा, बहुत सारे क्वेश्चन सब मॉड्यूल में मिलेगा, नॉट ओनली सब मॉड्यूल. इनफैक्ट ये क्वेश्चन आई थिंक मैंने चैतन्य से उठाया हुआ या नारायण से, जहां से उठाया दैट टाइम. Yes, Trusha, you got the right answer. Yusha गड़बड़ किया.
सर कितनी गड़बड़? बहुत ज्यादा। ठीक। मैथ में राइट आंसर इज 100% करेक्ट, 0% गड़बड़। रॉन्ग आंसर इज 100% गड़बड़। मानस, योर आंसर इज ऑल्सो रॉन्ग। सॉरी सर। हेलो हाँ सर। जी, योर आंसर इज नॉट राइट। परम, योर आंसर इज ऑल्सो नॉट राइट। यूषा, तू अभी भी गड़बड़ है। Okay, let's see the first question. So now, basically, if you see again, half, 1/4, 1/8, 1/16 was one pattern. Now we have got this relation that if fractional change is same, time taken will be same. That means, okay, Trusha, I think मुझे याद नहीं आ रहा exactly, but I'll see to that कितना आंसर आ रहा है. Okay, so if you see, ये C नॉट से C नॉट by 10 अगर मैंने किया, what is the percentage completion? 10%, right? 10% is the remaining. 90% completion. Completion is 90%. Percentage completion here is 0. Here it is 90%. If I am making it C naught by 100, this is 99%. है ना? If I am making it C naught by 1000, that is 99.9%. If I am making it C naught by 10,000, that is 99.99%. है ना? Is it okay? Because the remaining concentration here is 100%, 10%, 1%, 0.1%, 0.01%. Is it okay? This was 100 was remaining, 10 was remaining, 1 is remaining, 0.1 is remaining, 0.01 is remaining. Is it okay? Clear? Hai? Now, if you see in each part, if you see the fractional change or if you just see कि GP में आ रहा है कि नहीं, it is becoming 1/10 of initial. Again, it is becoming 1/10. Again, it is becoming 1/10. है ना? Every time it is becoming 1/10 of the initial. Is it okay? That's why it says कि यहां से यहां का टाइम, यहां के से यहां का टाइम अगर x मिनट है, तो यहां का भी टाइम x मिनट होगा, यहां का भी टाइम x मिनट होगा, यहां का भी टाइम x मिनट होगा, विच मीन्स यहां से यहां का टाइम अगर मैं पूछूं, विच इज आस्क्ड, दैट विल बिकम 4x मिनट है. तो 90% का जितना टाइम है, इफ दैट इज x, तो 99.99% का टाइम इज कमिंग 4x. That's why we'll say x equals 4. Is it okay? Simple, na? Now,
सर एक बार वापस बता सकते हो? देखो Like, ना, हर बार 1/10 हो रहा है ना इस सीरीज में. हाँ. Series में it is becoming 1/10. When it is simply 1/10, it is 90% of the initial was completed, है ना. Yeah. 10% remaining means 90% completion. If that time is given, तो उसका how much times will be the 99.99%? 99.99% is coming after 4 times of this series, है ना. चौथे स्टेप में आ रहा है ना. That's why every time it will be having the same time. If C naught से C naught by 10 का time x है, because it is a first order reaction, तो C naught से C naught by 10 का time अगर x है, तो C naught by 10 से C naught by 100 का time will also be x, है ना. Yeah. And that's why every time every interval will be with the same time, that is x, x, x and x. So if they have given you 90% का time कुछ x है, तो 99.99% completion का time is coming 4x. That means that is 4 times of the t 90%. Yeah. That's why we are saying t 99.99% is 4 times t 90%. Is it okay? Now, method 2. How to do it in traditional way. If I am simply knowing कि first order kinetics के लिए what was the formula, so I'll give you that method also so that you don't fail anywhere. ln c naught by c was kt, है ना, ये तो लिखा था. Okay, and then they have given you ln 90% completion का मतलब this is c naught by 10 and उसका time मान लो कुछ x. Okay, which means it says kx is ln 10, है ना, which means x is ln 10 by k. Now it says we want 99.99%. We know that at that time the concentration will be C naught by 10,000. And that's why मान लो वो time y है. So y is coming ln 10,000 upon k, which can be written as 4 times ln 10 by k, which is 4 times x, है ना. And that's why we are saying that x, अच्छा ये x मैंने assume कर लिया, चलो t1 लिख देता हूँ so that confusion should not be there. मान लो ये टाइम t1 है और ये टाइम t2 है. So then we are writing t1 is this much and next time we are writing t2 will be this much. It is the another method by the formula directly. So we will write, Sir, how did you know when it's going by 1/10 every time? because I know that 90% का मतलब remaining is 10%, है ना. 99% मतलब remaining is 1%. Is it okay? When we say, when they give you percentage completion, na, try to find out the percentage remaining and that will give you the pattern. Okay, जैसे I'll give you another example also. So यहाँ पे finally t2 is 4 times t1. That was the answer for the first part. इसी में I'll give you, like मान लो किसी ने बोला c naught से c naught by 2, c naught by 4 हुआ, you'll get numbers like ऐसा कुछ आ जाए, c naught by 16 हो गया, तो परसेंटेज रिमेनिंग, देखो ये 100 से 50 बचा है, ये 25 बचा है, ये 12.5 बचा है, ये 6.25 बचा है. तो परसेंटेज कंप्लीशन के नंबर्स इन क्वेश्चन यू विल बी गेटिंग, ये 0 होगा, ये 50 होगा, ये 75 होगा. दीज टाइप ऑफ नंबर्स यू विल बी गेटिंग इन द क्वेश्चंस. ठीक है, तो ये नंबर खुद ही हिंट कर देते हैं कि वी आर गेटिंग अ पैटर्न. ओके, क्लियर ना. Yes, sir. सो दैट वाज द फर्स्ट पार्ट जिसके मैंने दो मेथड बता दिए. दिस वाज मेथड 2 जिसमें वी हैव गॉन बाय द प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल. सेकंड पार्ट इज, the second part is they have given you t 90% is कितना दिया था, 60 minutes ना, it was 60 minutes. Then it is asking you half life बताओ. Already we have got ना that t1 is nothing but ln 10 by k है ना.
which means ln 10 by k is 60 minutes. And now they want t half batao. So t half was ln 2 by k. Is it okay? So we can write k was nothing but ln 10 by 60. And that's why we'll write this will become ln 2 upon ln 10 by 60. That becomes 60 times ln 2 by ln 10, 2.303 ये कर दोगे तो it will become log 2, and that will become approximately 18 minutes. Is it okay? Now let's get a pattern. So if t 90%, अगर हम लोगों ने बोला 16 मिनट 60 मिनट है, तो देखो t 99% will be double of that, that is 120 minutes. T 99.9% will become 180 minutes. T 99.99% will become 240 minutes. And एक और चीज है, T half is 18 minutes. So now if you see, this is 10 times, है ना? That means it is almost 10 T half, or we can say it is 10 half lives. So we are saying, अच्छा T 100% कितना होता है? If I ask you T 100%, what will be the answer? Infinity. It was infinity, है ना? मैंने बोला था जीरोथ ऑर्डर में सिर्फ ये फाइनाइट आता था, C नॉट बाय K आता था, otherwise it was infinite, है ना? So full time is infinite, but we can say that 99.9% of the reaction will get completed in 10 half lives, and practically we can say कि it is almost completed, है ना? But that is taking 10 half lives. Is it okay? So why is T100 infinity? Because the formula was ln C naught by C was KT. For T equals T 100%, हम लोग क्या बोले, कंप्लीशन का मतलब क्या हो गया, C इक्वल 0. C 0 रखो, देखो क्या होगा, Oh, yeah, yeah. will become ln infinity, and that's why T 100% is infinity. Okay, but we are saying that 99.9% of the reaction can be completed in almost 10 half lives. देखो log 2 का वैल्यू मैंने 0.3 लिया था, it is not exactly 0.301 जैसा, है ना? And that's why I'm every time I'm adding that word almost 10 half lives. So in almost 10 half lives, 99.9% of the reaction is getting completed. Is it okay? Any doubt up to this point? चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, then we'll close the lecture. हाँ, ये वाला कर, आई थिंक पूछा हुआ क्वेश्चन है, जेई का ही है, आई डोंट रिमेम्बर मेंस में पूछा या एडवांस में पूछा, मोस्टली एडवांस का क्वेश्चन. दिस इज द क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व इट. एंड पुराने वाले में किसी को कोई डाउट है तो जस्ट आस्क. इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस पार्ट, जस्ट आस्क. यहाँ इफ की जगह इटली. ये तो हमेशा ही होता है. Okay, now solve this question.
You sure wrong answer. Again wrong. क्यों जल्दी क्यों है इतनी? Why you are telling me these many answers, Yusha? सर मुझे ऐसे कंफ्यूजन है, ऐड होएगा कि सब्ट्रैक्ट होएगा कि सेम रहेगा। तूने This जेई is- को मजाक समझ रखा है? जेई नहीं को मजाक समझ रखा है तू? विद इन 5 सेकंड 3 आंसर बता रहा है मेरे को। ऐसे तू इंजीनियर बनेगा? नहीं सर। जॉब में जाएगा जूते मार के निकाल देंगे, क्योंकि एक एक नंबर का ना करोड़ में इंप्लीकेशन होता है। अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन। ये पेपर पे जब तक काम कर रहे हो ना तब तक ये मजाक दिख रहा है। ये नंबर्स तुम्हारा करोड़ ऑफ रुपीज का इंप्लीकेशन लेकर आएगा इंडस्ट्री में। इफ यू आर टेलिंग मी द रॉन्ग आंसर ना, वो अगर अप्लाई हो गया ना, इंप्लीकेशन उसका अगर दे दिया ना, एंड यू कैन हैव थाउजेंड्स ऑफ करोड़ इन फैक्ट। तो इसको इतना कैजुअली मत ले। इफ यू सीरियसली वांट टू बी एन इंजीनियर ना, यू विल बी डीलिंग विद crores ऑफ मनी। आई वाज इन अ प्रोजेक्ट व्हिच वाज हैविंग 37,300 आई थिंक, और 230 crores का प्रोजेक्ट था। and every number is very important. You have to give the basis of every number which you are using. In normal life में अपन कुछ भी बोल देते हैं, 5, 6, 8, 10, है ना, डेटा कुछ भी बोलते हैं। बट when you are going mathematical ना, when you are being mathematical, तो you can't just like report any number. सही बता रहा हूँ मैं, तू समझ ले इस बात। if you are serious about this profession ना, ये कैजुअली नंबर फेंकना बंद कर। एक दिन बर्दाश्त नहीं करेगा कोई भी तुमको जॉब में, इफ यू आर गिविंग सम रैंडम नंबर। पहली बात तो एक ट्रस्ट नहीं रहेगा तेरी बात पे कि तू जो बोल रहा है गलत ही बोले। ठीक है, तो हैव दैट ट्रस्ट कि जब तू कुछ बोल रहा है लिख रहा है ना, तो इट शुड हैव अ पॉइंट। विद इन 5 सेकंड तू 3 आंसर बोल रहा है। हाउ कैन आई टेक यू सीरियसली, है ना? तूने अगर जॉब को सीरियसली नहीं लिया है तो जॉब या इंडस्ट्री भी तेरे को सीरियसली नहीं ले। अंडरस्टैंड दैट पार्ट। नंबर यू ही फेंके जा रहा है, कभी 10 बोल रहा है, कभी 11 बोल रहा है, कभी 9 बोल रहा है। हैव दैट फर्म डिसीजन ना कि आई एम गोइंग लॉजिकल, आई एम गोइंग लॉजिकली, आई एम बीइंग मैथमेटिकल, है ना? तब जाके आई एम हैविंग सम फर्म नंबर। मिस्टेक्स आर ओके बट दिस एटीट्यूड इज नॉट। जेई उठा के फेंक देगा। जेई को तू सीरियसली नहीं लेगा तो जेई तुझे क्यों सीरियसली लेगा? 10-11 लाख लोग पड़े हुए। अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन एंड ट्राई टू करेक्ट योर एटीट्यूड, है ना, टुवर्ड्स रिपोर्टिंग दीज नंबर्स। ऐसा रैंडम कुछ भी बोल दिया, 10, 11, 9, 8 कुछ भी बोले जा रहा है। कौन तेरे नंबर को सीरियसली लेगा बता ना? तेरी बात पे कोई भरोसा ही नहीं करेगा, क्या इसका कोई फायदा ही नहीं इसके रहने का, ये कुछ भी बोलता है। तो हाँ जी। यस वो प्रोजेक्ट कौन से कंपनी का? प्रोजेक्ट बन गया, ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। बारमेर रिफाइनरी जानते हो, राजस्थान में देयर इज बारमेर रिफाइनरी बन रहा है, हाँ ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे। इस प्रोजेक्ट का वैल्यू वाज एट दैट टाइम जब मैं था एचपीसीएल में, तो इट वाज 37,230 crores। हाँ, सरकारी किसका प्रोजेक्ट प्लांट? में तो बहुत कहानियां बनती है, तो बहुत कुछ हो रहा था। किसका प्लांट? हाँ, एचपीसीएल अलॉन्ग विद राजस्थान गवर्नमेंट। तो इट वाज लाइक कि जब पहली गवर्नमेंट थी तो उसने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, दूसरी गवर्नमेंट आई तो उसने उसको स्क्रैप कर दिया, फिर से वापस वो गवर्नमेंट बनी पहली वाली तो उसने फिर से स्टार्ट किया। इट इज ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन। सो नंबर्स आर नॉट जोक। अंडरस्टैंड दैट इफ यू आर इन दिस फील्ड। ये नंबर नॉर्मल लाइफ में हम लोग कुछ भी बोल देते हैं। यू शुड हैव दैट स्ट्रेंथ ना, और द एटीट्यूड कि मैं जो बोल रहा हूँ उसके पीछे फर्म बेसिस होना चाहिए। उस बेसिस को क्वेश्चन करना या उसको सीखना इज अ डिफरेंट पार्ट। बट मैं रैंडमली कुछ भी नंबर थ्रो किए जा रहा हूँ ना, नोबडी इज गोइंग टू टेक मी सीरियस। अंडरस्टैंड दैट यूशा। तुझे लोग सीरियसली लेते हैं क्या? नहीं सर। इफ यू काउंट दैट ना, तो 5 लोग नहीं मिलेंगे जो तुझे सीरियसली लेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि तू कुछ भी बोलेगा पहले, बाद में सोचेगा। देयर इज अ कोटेशन, ये बड़े बुजुर्ग बोल के गए, सोच समझ के बोलो। ये सीक्वेंस बहुत क्लियर है। इफ यू आर गेटिंग अ थॉट ना, पहले उसको मनी मन एनालाइज करो, दिस थॉट इज ओके और नॉट, देन ओनली स्टार्ट ओपनिंग योर माउथ।
ऐसा थोड़ी बोलते, बोल के समझो फिर सोचो। तू उल्टा कर रहा है, तू पहले बोल लेता है, फिर समझता है, फिर सोचता है। यस सर मेरा सही है। ओके, व्हाट्स योर आंसर, लेट मी सी। नॉट एग्जैक्टली, नो। सर मैंने भी भेजा अपना। ओके, लेट मी सी। या क्रिस, यू हैव गॉट द राइट आंसर। सर मैं क्लोज हूँ मतलब। हाँ, क्लोज है तू, पता नहीं अप्रोक्सीमेशन क्या क्या किया। हाँ सर देखता हूँ। ओके, लेट्स सी। हम लोग जब डायरेक्टर के पास एक डॉक्यूमेंट लेके जाते थे ना, एक प्रपोजल, तो प्रपोजल होता था 1 पेज का, और उसके पीछे 50 पेज के अपेंडिक्स होते। इट्स लाइक एक नंबर जो कोट किया है ना, व्हाट वाज द बेसिस ऑफ दैट कैलकुलेशन, दैट डायरेक्टर विल बी रेफरिंग टू दोज कैलकुलेशन फर्स्ट। ये बेसिस ही गलत है, ये क्यों अज्यूम किया। तो यू, रियल लाइफ में देयर आर मेनी वेरिएबल्स। अभी मैथ से खेल रहे हो ना, 1-2 वेरिएबल में काम करते हो, निश्चित योर आंसर इज नॉट राइट। मैथ में क्या होता है ना, अपन जब तक ये पेपर पे 11th-12th में खेल रहे हैं ना, इट इज लाइक 1 और 2 वेरिएबल, मैक्सिमम 3 वेरिएबल, कभी कभी रेयरली आते हैं। लाइफ इज नॉट लाइक दैट। लाइफ इज हैविंग मल्टीपल वेरिएबल्स, इसलिए मैथ के लोग यहाँ फेल कर जाते हैं लाइफ में। व्हाई दे गेट फेल्ड? बिकॉज आदत है वन डायमेंशनल सोचने की। लाइफ इज नॉट हैविंग वन डायमेंशन, है ना, बहुत सारे वेरिएबल्स पैरेलल में काम करते हैं। ओके परम, नाउ यू हैव गॉट द राइट आंसर आई थिंक। और किसने रिपोर्ट किया है? Trusha, you have got the right answer. Yes. Okay, let's see. First thing is language is very. Now you have got the right answer, I think, Yusha. Okay, so basically, if you see, पहली बात तो ये decomposition 2 बोल रहा है. That means it is telling you C naught से C naught by 8 का time. It is not the consumption, it is the final fraction. And that means it is saying if this time is T1 by 8 and C naught से C naught by 10 का time is T1 by 10, then it is asking the ratio and then into 10 times, है ना, ये पूछ रहा है. Now if you see, again there are 2 ways. One way is going by mathematical formula, and that says if I am writing this one k into T1 by 8, then T1 by 8 becomes ln 8 by k, है ना, which is 3 ln 2 by k. और ऐसे में मैंने T1 by 8 को 1/8 होने में 3 हाफ लाइफ्स लगता है, ये तो पहले भी सीखा था. And then second part is C naught by 10, and that is K T1 by 10. यहाँ पे 1 by 10 is not the fractional conjugate because they have defined it like this. The decomposition to this fraction is having these many times. And that's why T1 by 10 will be ln 10 by K, which can be written as 2.303 upon K. Now if you see, ratio ले लो, T1 by 8 upon T1 by 10 will become 3 times, this becomes 2.303 into log, और k तो cancel out हो जाएगा. And that's why it is coming 3 times log 2, which approximately is 3 times 0.3. Otherwise 0.301 लेता तो 0.903 जैसा कुछ आता है ना. So this is very close to 0.9, and 10 times of that will become 9. Is it okay? So T1 by 8 by T1 by 10 times 10 will become 0.9 into 10, which is 9. That is the answer. Is it okay? सर हाँ. सर कल का आइसोमेरिज्म का क्लास, मतलब कल आयोनिक और आइसोमेरिज्म आप ऑनलाइन रख सकते हो, क्यों, क्या हो गया? क्योंकि 3 जन हमारे में से ऑनलाइन ही अटेंड करने वाले। ठीक है, मैं बाकी सबसे पूछ लेता हूँ. इफ इट इज पॉसिबल तो आई विल कीप इट ऑनलाइन. ठीक है, हाँ सर प्लीज। बाकी सर सबसे. मैं ट्राइपॉड ला सकता हूँ, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो दिक्कत ये है ना, फोन डिस्चार्ज हो जाता है, बीच में बंद हो जाता है, वहां पर मेरे पास वाईफाई नहीं होता है ना, ये सब प्रॉब्लम. हाँ
सो इफ इट इज लाइक कि मैक्सिमम लोगों के लिए अगर ऑनलाइन चल रहा है तो फिर आई कैन हैव दैट ऑनलाइन, ठीक है। विल Yes. सी दैट, मैं एक बार सबसे बात कर लेता हूँ, ठीक है, देन आई विल लेट यू। तो क्योंकि आई थिंक सोनिया भी बाहर है सोनिया और इज एक आल्सो जन आउट। कोई, मैं भी बाहर हूँ और एक कोई जन और सोनिया वो होने वाला है। दूसरे वाले रूम में हम लोग जो रूम में बैठते हैं उसमें इंटरनेट नहीं आता है, पर वो जो बड़ा वुड बेंच वाला रूम है ना उसमें आता है। इंटरनेट आता है मतलब मेरे मोबाइल के नेटवर्क पे डिपेंड करेगा ना। अरे नहीं 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 सर, वो जब श्रीनिवासन सर भी लेते थे ना तो उन्होंने इसलिए ही बंद किया था कि वो छोटे वाले रूम में आते ही नहीं था। ओके ओके ओके, ठीक है, मैं देख लेता हूँ एक बार। मतलब मान लो अगर आधे लोगों के लिए ऑनलाइन ही आ रहा है तो फिर पूरा ही ऑनलाइन कर लेंगे, बट विल गिव मोर टाइम की ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो, है ना, दैट वाज द मेन इशू, है ना। तो आई जस्ट इंटरेक्ट विद ऑल ऑफ यू एंड देन विल हैव द डिसीजन, ओके, डोंट वरी। क्योंकि वहां मेरे साथ ये सब चक्कर होता है, फोन डिस्चार्ज होगा फिर उसको चार्ज में लगा के रखो, नेटवर्क का इशू आएगा, सर सुनाई नहीं दे रहा है, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन, है ना, ये सारा इशू आता है। दैट्स वाई तो मैंने अनुराग को वापस शिफ्ट किया उधर। ठीक है, चलो क्लोज करते हैं, है ना। I think this lecture was, I think, good enough to give you the idea कि how to apply these type of tricks in these type of questions. And जहाँ first order है ना, तो nuclear physics का radioactivity also follows first order kinetics. तो देखो कि बहुत सारे question of radioactivity you can handle with this type of formula or this type of trick. ठीक है। Next day we'll talk about जब भी kinetics, in fact कल ही तो है, तो we'll, कल है कि कल नहीं रखा है, I don't remember, मैं देखता हूँ, ठीक है। So now basically I think कल नहीं रखा होगा ना, काइनेटिक्स का कल नहीं रखा है ना। नहीं सर, फ्राइडे। हाँ, वो बिकॉज ऑफ अंधेरी वाला लेक्चर था इसलिए नहीं रखा है ना। ओके, सो बेसिकली परसों जब हम लोग देखेंगे ना तो विल बी टॉकिंग अबाउट the graphs which is related to these type of orders, particularly 0, second and first order, what type of questions can come, and वो सारा देखने के बाद we'll go in more detail of the first order kinetics itself. That is the main portion of this chapter that we need to deal with all the aspects of first order kinetics. So after graph, we'll stick to the first order kinetics only. We'll leave the second order and zero order पीछे छोड़ के उसको आगे निकल जाएंगे, ठीक है। ओके, चलो क्लोज करते हैं ना। सर हाँ जी, सर लेक्चर 5 तक खत्म ऑलमोस्ट हो जाएगा, मतलब काइनेटिक्स की थोड़ा बचा मोस्टली रहेगा। मोस्टली आई एम गोइंग बाय मोस्टली दैट स्पीड की हो जाना चाहिए। ओके ओके। लास्ट में थोड़ा सा थ्योरेटिकल डिस्कशन है, अदरवाइज इट इज टोटली न्यूमेरिकल, दिस चैप्टर इज टोटली न्यूमेरिकल। हाँ सर, वो कैटलिस्ट और वो सब ना। हाँ हाँ, हाँ वो जब थोड़ा। हम लोग कॉलिजन थ्योरी पे जाएंगे ना, कॉलिजन थ्योरी एंड ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में थोड़ा सा थ्योरी चलता है, अदरवाइज इट इज टोटली न्यूमेरिकल, तो फटाफट निकल जाए। ओके सर। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू सर। सर मैंने आपको एक डाउट भेजा। 1 मिनट। सर हाँ, व्हाट्सएप पे। ओके क्या? यस सर। अरे रोटेट करके भेजा करो यार, मैं इधर करता हूँ ना। क्या है फर्स्ट टाइम इसको। तो सर इसके साथ इसके अभी जो तक जो भी किया है हम्म, उस पर कोई शीट भेज दो ना। मैं भेज दूंगा, एंड इफ पॉसिबल मैं देखता हूँ अगर पेज का मॉडल पर होगा तो उससे भी टिक लगा के, ठीक है। पेज का मॉड्यूल तो कर लिया मैं। कर लिया क्या? ठीक है, मैं अलग से शीट हाँ चलेगा। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर, बाय सर। So, bye. ओके।